ભાજપ આગામી 48 કલાકમાં જાહેર કરી શકે છે યાદી। આ માટે મોડી સાંજ સુધી અમિત શાહના નિવાસસ્થાને બેઠકોનો દોર પણ મળ્યો હતો। બાકી રહેલી 7 બેઠકો અમદાવાદ, પૂર્વ, મહેસાણા, પાટણ માટે મંથન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરત, આણંદ, જૂનાગઢમાં પણ ઉમેદવારોના નામ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। તો છોટાઉદેપુરના ઉમેદવારનું નામ જાહેર થવાનું બાકી છે। જ્યારે જૂનાગઢ બેઠક પર રાજેશ ચુડાસમા રિપીટ થશે તો આણંદ અને સુરતમાં ઉમેદવારો રિપીટ કરાય તેવી પણ શક્યતા છે। तो पीएम मोदी सांजे समग्र देश में 500 स्थलों एक साथ में भी चौकीदार अभियान अंतर्गत लोगों साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सीधो संवाद करशे। आ कार्यक्रम मुख्य स्थान दिल्ही हशे, ज्यांथी वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी तमाम चौकीदारों साथ संवाद करशे। वीडियो कॉन्फ्रेंसना माध्यमथी वडाप्रधान भाजप नेताओं और एनडीए सहयोगीओ और डॉक्टर, वकील, एकाउंटન્ટ, आईटी प्रोफेशनल सहित तमाम नवा मतदाताओं साथ बात करशे। तो खेडूतो, पूर्व सैनिकों, वेपारीओ और व्यवसायिकों साथे पण मोदी सीधो संवाद करशे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं साथे चांदनी चौक संसदीय क्षेत्रना हेरिटेज बेंक्वेट लॉरेंस रोड पर वडाप्रधानना कार्यक्रमने सांभळशे। तो केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट पर कार्यकर्ताओं साथे वडाप्रधानना कार्यक्रम में जोड़ाशे।